Bismillahirrahmanirrahim. The topic of our discussion is DNA damage and repair. DNA damage means if something happens with the DNA which affects the structure or the structure of the nucleotide, and repair means to undo that damage. उस डैमेज को undo करना, उस डैमेज को correct कर लेना. So DNA damage basically different type of DNA damages exist करते हैं और हर DNA डैमेज को एक डिफरेंट रिपेयर मैकेनिज्म उसको अनडू करता है, उसको करेक्ट करता है, रिपेयर करता है. So there exist four different types of repair mechanism, and each repair mechanism it repair the different types of the damage. The first one is the direct repair mechanism. Second one is the excision repair mechanism. Third one is the mismatch repair mechanism, and the last one is the recombination repair mechanism. Direct repair mechanism, as it's obvious from the name, ये डायरेक्टली सिर्फ डैमेज साइट को रिपेयर करता है. डैमेज साइट रिपेयरिंग से मुराद ये है कि ड्यूरिंग द रिपेयर मैकेनिज्म ना ये अपस्ट्रीम न्यूक्लियोटाइड को अफेक्ट करता है ना डाउनस्ट्रीम न्यूक्लियोटाइड को अफेक्ट करता है, बल्कि डायरेक्टली सिर्फ जो डैमेज न्यूक्लियोटाइड होता है उस डैमेज न्यूक्लियोटाइड को ये रिपेयर करता है. एक्सिजन रिपेयर मैकेनिज्म में डैमेज साइट्स के अराउंड अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का फ्रैगमेंट बेसिकली ड्यूरिंग द रिपेयर मैकेनिज्म रिमूव होता है, और रिमूव होने के बाद जो गैप क्रिएट होता है दैट गैप इज देन फिल्ड इन बाय द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन्वॉल्व इन द रिपेयर मैकेनिज्म, एंड देन द डीएनए ligase it joins the pre-synthesized strands. Third one is the mismatch repair mechanism. Mismatch means if non-standard complementation happens between the two DNA strands. Okay, for example, normally G complement करता है with the C और A complement करता है with the T and vice versa. जबकि mismatch में non-standard complementation यानी C complement कर जाए with the A या with the T और G complement कर जाए similarly with the A or G, A or T. So such a kind of non-complementary, non-standard complementation is called mismatch, और mismatch को repair करने का अपना एक repair mechanism है. And last one is the recombination repair. Recombination repair generally it leads to a double-stranded breakage. क्योंकि repair mechanism में when the DNA strand they exchange the nucleotide with each other, generally एक single nucleotide nick create होता है basically, और nick create होने के बाद the cross strand they join each other and then they make a holiday structure, or then this holiday structure it moves along the length of the DNA molecule, and while moving along the length they exchange the nucleotide with each other. तो जनरली और सिंगल के बजाय जब बाज़ औक़ात डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक क्रिएट हो जाता है, सो इट स्प्लिट द डीएनए मॉलिक्यूल. सो इस किस्म के डैमेज को रिपेयर करने के लिए सेल के अंदर एक सेपरेट रिकॉम्बिनेशन रिपेयर मैकेनिज्म जो डैमेज साइट को करेक्टली रिकॉग्नाइज करके और फिर देन इट लाइगेट इट अगेन. इनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन कि डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म फॉर एग्जांपल ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, इसमें ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है जो अफेक्टेड है. So the direct repair mechanism will directly and only repair that particular damaged nucleotide and will restore the DNA strand. Excision repair mechanism में जो damaged nucleotide होता है इसके around upstream downstream एक complete oligonucleotide का fragment remove होता है, like in this case excised. ये excision से word निकला हुआ है excise. Excise means remove. और फिर then this gap is filled in by the DNA polymerase to make a correct DNA strand. मिसमैच में फॉर एग्जांपल जो कंप्लीट लाइन आपको नज़र आ रही बिटवीन द टू डीएनए स्ट्रैंड दे शो द स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंटेशन, लेकिन जहाँ पे आपको हाफ लाइन नज़र आ रही है इट मींस कि इट्स अ नॉन स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंटेशन. तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि डीएनए का स्ट्रैंड विच बेयर्स नॉन स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड, तो उसके अराउंड कंप्लीट एक पैच रिमूव होता है, एक गैप क्रिएट होता है, देन दिस गैप इज देन filled in by the DNA polymerase involved in the repair, and then a correct DNA strand is restored. Or recombination repair may when it leads to a double stranded breakage.
So recombination repair mechanism, it recognizes the correct ends. For example, ये DNA का strand दो में split हो गया, so these two are the correct ends. Neither this, neither this one. तो इन ends को correctly recognize करने के बाद, it is then joined up by the recombination repair mechanism. Now there exist different types of direct damages which affect the nucleotide and which is then repaired by the direct repair mechanism. The first one is the nick. Nick simply means the breakage of the phosphodiester bond. For example, ये दो न्यूक्लियोटाइड हैं जो एक ही डीएनए के स्ट्रैंड पे रन हो रहे हैं. इन दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान let's say कि this one is the phosphodiester bond. So if this phosphodiester bond is resolved, so such a kind of gap is called as the nick. लेकिन इसको gap तब बोलेंगे जब ये complete न्यूक्लियोटाइड रिमूव होगा. तो जब एक डीएनए स्ट्रैंड में एक न्यूक्लियोटाइड रिमूव होता है, so then we call this as a gap. लेकिन अगर दो न्यूक्लियोटाइड अपनी जगह इंटैक्ट रहें, सिर्फ एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेकअप हो जाए बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड्स, तो इसको जनरली निक बोलते हैं. और ये बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये जनरली कॉज होता है. तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है तो ये बॉन्ड दोबारा इस्टेब्लिश भी हो सकता है, बिकॉज क्योंकि इसमें न्यूक्लियोटाइड तो अफेक्टेड होते नहीं है, सिर्फ ये बॉन्ड रिजॉल्व हो जाता है. तो इसको दोबारा डीएनए लाइगेज सिंपली इसको जॉइन अप कर देता है. सो इट मीन्स के यहाँ पे कोई न्यूक्लियोटाइड रिमूव नहीं हुआ, डायरेक्टली जो डैमेज साइट है वहाँ पे आके एक एडिशनल एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इस्टेब्लिश हो गया. सेकेंड इज अल्काइलेशन डैमेजेस. अल्काइलेशन के जब कोई नाइट्रोजनस बेस मिथाइलेट हो जाए, तो और ये चूँकि स्मॉल केमिकल मॉइटीज होती हैं, तो अगर कोई मिथाइल ग्रुप ऐड हो सकता है तो वो ये रिवर्सिबल मैकेनिज्म में वो रिमूव भी हो सकता है. जनरली ई कोलाई में एडीए एंजाइम्स एडेड मिथाइल ग्रुप को अल्काइल ग्रुप को रिमूव करते हैं. उनके साथ यूक्रियाट एमजीएमटी एंजाइम्स उनको रिमूव कर देते हैं. तो चूँकि इसमें डायरेक्टली जो डैमेज न्यूक्लियोटाइड होता है सिर्फ वही रिपेयर होता है, जो केमिकल मॉइटी जिस डैमेज न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होती है उसी से सिर्फ वो रिमूव होती है. रेस्ट ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड एंड न्यूक्लियोटाइड रिमेन्स इंटैक्ट. So that's why we call it the direct repair mechanism. The other damage is the cyclobutyl dimer, जिसको photodimer भी बोलते हैं या pyrimidine dimer भी बोलते हैं. कि during intensive UV light, sometimes the adjacent pyrimidine residue, for example ये thiamine दोनों pyrimidine हैं, तो जो adjacent करीब करीब present pyrimidine है, they make additional bond like in this way. तो जब ये उनको photodimer बोलते हैं because this process is mediated or induced by the UV light. That's why we call it the photodimer. और pyrimidine dimer because के जो adjacent pyrimidine न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके दरमियान ये जनरली बनता है. प्यूरिन में बहुत कम बनते हैं, इसलिए इसको pyrimidine dimer बोलते हैं. और cyclobutyl dimer के चूँकि जब additional bond बनते हैं तो they make a cyclic structure apart from the normal structure of the pyrimidine. तो इसलिए इसको cyclobutyl dimer भी बोलते हैं. और ये जस्ट और इसमें न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड का जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट नहीं होता, सिर्फ एडिशनल बॉन्ड्स बनते हैं. तो अगर एडिशनल बॉन्ड बन सकते तो ये रिजॉल्व भी हो सकते हैं. इट्स अ रिवर्सिबल मैकेनिज्म. तो ई कोलाई में जनरली डीएनए फोटोलाइज एंजाइम जो एडिशनली क्रिएटेड बॉन्ड्स होते हैं उनको रिजॉल्व करके फोटोडाइमर को रिजॉल्व कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं. तो अब इसमें भी चूँकि कोई अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का फ्रेगमेंट रिमूव नहीं होता, बल्कि द मोड ऑफ एक्शन इज डायरेक्टली एक्टिंग ओवर द डैमेज साइड, सो दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द डायरेक्ट रिपेयर. नेक्स्ट इज एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म. एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म के फिर दो टाइप्स हैं, बेस एक्सीजन रिपेयर एंड द न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर. ये भी नेम से ऑब्वियस है, बेस एक्सीजन रिपेयर. बेस एक्सीजन रिपेयर मीन्स कि जो डैमेज न्यूक्लियोटाइड का जो डैमेज नाइट्रोजनस बेस है, जस्ट वो नाइट्रोजनस बेस रिमूव हो और वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो, and then this single nucleotide gap is filled in by the DNA polymerase involved in the repair. तो और सेकंड न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन में जो डैमेज साइट है इसके अराउंड पैच कंप्लीटली रिमूव होता है. तो चूंकि न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन में पैच रिमूव होता है इसलिए इसको न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन, और बेस में पहले बेस रिमूव होकर फिर वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड रिमूव होता है इसलिए इसको बेस एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म बोलते हैं. So base excision repair mechanism, for example, it's a DNA strand. इस DNA strand में just consider this nucleotide और इस nucleotide का for example इस राइबोस शुगर के साथ अटैच नाइट्रोजनस बेस ये डैमेज है. तो बेस एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म में स्टेप बाय स्टेप रिमूवल होती है एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की. पहले स्टेप में
इस नाइट्रोजनस बेस और इस राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के दरमियान जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, दैट बॉन्ड इज ब्रेक डाउन बाय द डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर ये बाकी का जो बैकबोन है ये इंटैक्ट रहेगा, सिर्फ इस न्यूक्लियोटाइड और इस न्यूक्लियोटाइड में इस राइबोज शुगर के साथ अटैच जो बेस है ये रिमूव हो जाएगी। जब रिमूव होगी तो बाकी न्यूक्लियोटाइड के साथ तो अपनी बेस रहेंगी, इसके साथ बेस नहीं रहेंगे, तो इस साइट को बोलेंगे ए प्यूरिनीन साइट या एपी साइट। ये एपी साइट ये क्रिएट हो गई है बिकॉज ऑफ रिजॉल्विंग दिस फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जब एपी साइट क्रिएट होती है देन दिस बैकबोन ribose sugar and this phosphate bond is also resolved in upstream downstream phosphodiester bonds हैं ये भी resolve हो जाते हैं in order to remove this remaining ribose sugar in the phosphate group to create a single nucleotide gap. So these phosphodiester bonds are resolved by the AP endonucleases. तो एपी साइट में फिर ये राइबोज शुगर और फास्फेट के अराउंड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को रिजॉल्व करके एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का गैप क्रिएट किया जाता है एंड दैट गैप इज क्रिएटेड बाय द एपी एंडोन्यूक्लियेसेस। And then in the last step, this gap is filled in by the DNA polymerase and the strands are joined by the DNA ligases. While a nucleotide excision repair mechanism, that mechanism is repaired by the UVR-ABC complexes. UVR-ABC complexes का mode of action कुछ यूँ होता है कि initially a trimeric complex consists of 2 UVRA and 1 bigger UVRB complex. They approach the damaged site and recognize the damaged site. इसमें UVRA का ट्रांजिट रोल है। ये डैमेज साइट को रिकॉग्नाइज करने के बाद ये लीव कर जाता है कॉम्प्लेक्स से, एंड देन दिस कॉम्प्लेक्स इज जॉइंड बाय द UVRC. तो डैमेज साइट पे अटैच UVRB एंड C, they then remove this patch of the nucleotide around the damaged nucleotide, जिसमें UVRC it produces upstream cut and UVRB they produces the downstream cut. UVRC डैमेज साइट से अपस्ट्रीम और B UVRC डैमेज साइट के डाउनस्ट्रीम कट प्रोड्यूस करता है। इनमें इन प्रोटीन्स के अंदर एंडोन्यूक्लियस की एबिलिटी भी होती है बेसिकली। तो जब ये कट प्रोड्यूस करते हैं देन आल्सो रिमूव दिस पैच, ये पैच को रिमूव करते हैं और जो गैप क्रिएट होता है इनिशियली दैट गैप इज ब्रिज बाय दिस UVRB complex in order to avoid the breakage of the single stranded DNA strand. So जब ये gap create होता है then this gap is filled in by again by the DNA polymerase 1 in case of the eukaryotes, prokaryotes, and then the strand is joined by the DNA ligase. So in this way this damaged site is repaired. तो चूंकि यहाँ पे complete patch remove होता है and then patch is filled in by the DNA polymerase 1 and DNA ligase join up the strand, इसलिए इसको न्यूक्लियोटाइड एक्सक्रीशन रिपेयर मैकेनिज्म बोलते हैं। जबकि बेस एक्सक्रीशन रिपेयर मैकेनिज्म में एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड गैप क्रिएट होता है और ये स्टेप बाय स्टेप ही मैकेनिज्म प्रोसीड करता है, इसलिए इसको बेस एक्सक्रीशन रिपेयर मैकेनिज्म बोलते हैं। पहले इसमें बेस रिमूव होता है, देन दिस डैमेज साइट पे राइबोज शुगर रिमूव होता है, एक गैप क्रिएट होता है, देन दिस गैप इज फिल्ड इन बाय द DNA polymerase and joined up by the DNA ligase.